एक में हम जाएंगे प्यारे मित्र लोग। Now Jesus was praying in a certain place, and when he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John taught his disciples. ఆయన ఒక చోట ప్రార్థన చేయుచుండెను. ప్రార్థన చాలించిన తరువాత ఆయన శిష్యుల్లో ఒకడు, ప్రభువా, యోహాను తన శిష్యులకు నేర్పించినట్టుగా మాకును ప్రార్థన చేయ నేర్పుమని ఆయనను అడిగెను. హల్లెలూయా. Say everyone hallelujah. Hallelujah. Simon. Here Jesus was praying. यहाँ जीसस प्रार्थना कर रहे थे. You see, dear friends, who is Jesus? यीशु मसीह कौन है? Yesu Prabhu evaru? यीशु मसीह कौन है? बोलिए. Who is Jesus? बोलिए. जीसस कौन है? Son of Yesu God. Prabhu evaru ప్రియులారా చెప్పండి. परमेश्वर का पुत्र है. Son of God. Huh? Son of God. Son of God. God. परमेश्वर का पुत्र है. and Son of Man also is God, Son of Man. परमेश्वर. Son of God, Son of Man. You see, dear friends, he was on the earth. ఆయన భూమి మీద ఉండినాడు ప్రియులారా. धरती पे थे जीसस. He was not in heaven. स्वर्ग में नहीं थे उस समय में. But dear friends, he wanted to have connection with heaven. ఆయన పరలోకముతో సంబంధము కలిగి జీవించినాడు ఈ లోకంలో. लेकिन जब वे धरती पे थे परमेश्वर के साथ संबंध रख के जिया. Hallelujah. Hallelujah. Though he was on earth, और भूमि ले ఆయన భూమి మీద ఉన్నప్పటికీ भूमि पर रहने पर भी he was connected with heaven. स्वर्ग పరలోకముతో కనెక్ట్ అయి ఉండినాడు. और परलोकத்துல कनेक्ट आயிருந்தார். परलोकத்துக்கு. Hallelujah. Hallelujah. How to connect with heaven? परलोकத்தோடு పరలోకముతో మనం ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి? நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்றது? What Jesus did. ஏசாமி என்ன சொன்னார்? What Jesus did. ஏசாமி என்ன சொன்னார்? He was praying. அவர் பிரேயர் The பண்ணிருந்தார். prayer connects us with heaven. Hallelujah. நம்ம பிரேயர் பண்றப்போ கர்த்தரோட நம்மள கனெக்ட் பண்ணுது. जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से हमको कनेक्ट करते हैं. Jesus was praying here. இங்க ஏசாமி கூட பிரேயர் பண்ணி கொண்டிருந்தார். And यीशु मसीह भी प्रार्थना कर रहे हैं. Disciples were watching. और శిష్యులు గమనిస్తూ ఉన్నారు. ये 6 लोग जीसस को प्रार्थना करना ऑब्जर्व कर रहे थे. கர்த்தராக இயேசுவை ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறது அவருடைய சீஷர்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தார். One grandmother was telling, और ग्रैंडमदर இப்படி சொல்லி கொண்டிருந்தார். my granddaughter, एक मनवराल, नानी ने ऐसे बोल रहे थे. she goes into my room. என்னுடைய ரூம் ఆ రూమ్ లోకి వెళ్తారు. என்னுடைய பேத்தி She closes the door. కదల Door మూసేస్తారు. రూమ్ को बंद कर देती And है. she will cover one towel upon her head. ఇప్పుడు ముక్కాడు తల మీద ఒక టవల్ కప్పుకుంటారు. एक And she will pray like this. ऐसे लगी के ऐसे प्रार्थना करती है. छोटी Pray చేస్తూ ఉంటారు. प्रार्थना करती है. One day, grandmother wanted to see what she was doing inside. वो नानी ने देखा ఏం చేస్తా ఉందో చూద్దామని వెళ్ళిందట. ये अंदर जाके क्या She opened the door. இவங்க என்னதான் பண்றா இந்த பொண்ணு அந்த Door తెరిచిందట. తెరవగానే she was on knees. ములంగాలు పోட்டு మోకాళ్ళ మీద ఉండిందట. அந்த பொண்ணு And ప్రే praying. And she recorded that. प्रार्थना कर रही थी. From where she learned that? अब எங்க இருந்து கற்றுக்கணும்? ये लड़की को ऐसे From प्रार्थना TV, करना. watching TV, cinema, dance. सिनेमा डांस से Huh? आते हैं क्या प्रार्थना? Everybody doing that only. आजकल लोग ऐसे कर You रहे हैं. keep the TV, all the dirty dance you watch with your children. हाँ, टीवी में आप सारा And your children will go and dance with some other girl, some other boy. हमारा बच्चे भी उसको देख रहे हैं. वहाँ देख के वो भी जाके किसी और एक लड़की से लड़का से डांस करते Then हैं. I asked her how she was praying. कैसे वैसे ये From where she learned. ये छोटी सी लड़की प्रार्थना कर And रही she है. said, Pastor, when I pray, she was observing. पास्टर నేను వెళ్ళి అలా రూమ్ లో ప్రార్థన చేయడం నా మనలో చూస్తూ ఉండాలి అని. నా ముఖాడు కూడా జబికిరదే నేను పేతి పార్తి కొండే. You see, if you pray, में जाके your children will see that. मैं रूम में
जाके प्रार्थना If you are always on phone, TV, or roaming here and there, ఎప్పుడు టీవీ చూసుకుంటూ సెల్ ఫోన్ చూసుకుంటూ తిరుగుతూ ఉంటే నీ పిల్లలు కూడా అలా తయారవుతారు. हम प्रार्थना करना हमारा बच्चे देखेंगे तो वो लोग भी सीखेंगे. हम हमेशा टीवी देखें, सेल फोन देखें, वैसे ही हमारा बच्चे भी वैसे ही You see, dear friend, your children are the prints of you. நம்மளுடைய பசங்க నీ పిల్లలు నువ్వు ఎలా ఉన్నావో అలాగే తయారవుతారు. நம்மளுடைய प्रिंट हमारा बच्चे If you are dirty, don't expect your children holy. నీవు డర్టీగా ఉంటూ నీ పిల్లలు పరిశుద్ధంగా ఉండలేరు. நம்ம அசுத்தமான வாழ்ந்துകൊണ്ട് நம்ம பசங்க பரிசுத்தமா இருக்கணும். Definitely they will also become dirty drunkards. हम पवित्र जीवन नहीं जिएंगे Like you. नहीं करेंगे तो हमारा बच्चे भी प्रार्थना नहीं करेगा, पवित्र जीवन नहीं जिएगा. But dear friends, लेकिन प्यारे when disciples saw Jesus was praying, जब यीशु శిష్యులు मसीह చూస్తున్నారు యేసు ప్రభు ప్రార్థన చేయడం. चेलों ने देखा यीशु मसीह प्रेयर कर रहे थे. And they themselves wanted to pray. The desire came in. We also should pray like Jesus. तो भी आशा आ गई. మేము కూడా యేసు ప్రభు లాగా ప్రేయర్ చేయాలి. हम भी जीसस जैसे प्रार्थना करना है. நாங்களே இயேசுவை போல நம்ம ஜெபிக்கணும் அப்படின்ற அவங்க ஆசை வந்துச்சு. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Then Jesus, they asked him, அப்போ இயேசுவை கேட்டாங்க. teach us to pray. ये जीसस के पास ప్రార్థన చేయడం మాకు నేర్పించు ప్రభువా. जीसस के पास जाके पूछ रहे, जीसस हमको सिखाओ हम कैसे प्रेयर करना है. நீ சொல்லி கொடுங்கப்பா, எப்படி நம்ம பிரேயர் பண்றது. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. Hallelujah. At least they had the desire to pray. அந்த ஆசை இருந்தது prayer Many करने. Christians don't have the desire to pray. उनको आशा था प्रार्थना करने के लिए. बहुत सारे क्रिश्चियन को आजकल प्रार्थना करने की आशा ही नहीं है. You're missing so much. நிறைய பேர் கிறிஸ்டியன்ஸ் பிரேயர் ఎంతో పోగొట్టుకుంటున్నావు. நிறைய மிஸ் பண்றோம் பிரேயர் பண்ணாமல் இருந்தால். हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम बहुत मिस कर रहे हैं. So Bible says बाइबल बोलते हैं here यहाँ क्या बोल रहे in हैं. 1 John, यूहन्ना 1 में 1 John 4th chapter, 1 यूहन्ना 4 ఒకటవ యోహాను 4వ అధ్యాయం 1 यूहन्ना 4 में क्या लिखा है. 9th verse. 9 में In this the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world so that we might live through Him. మనము ఆయన ద్వారా జీవించున్నట్లు దేవుడు తన అద్వితీయ కుమారుడిని లోకములోనికి పంపెను. దీని వలన దేవుడు మన యందు ఉంచిన ప్రేమ ప్రత్యక్షపరచబడెను. Hallelujah. Listen, dear friends. देखिए प्यारे मित्र, The Bible says here, बाइबल यहाँ क्या बोल रहे हैं. that God manifested His love through Jesus. परमेश्वर उनका प्यार हमारे और यीशु मसीह के द्वारा दिखाया है. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. God sent Jesus to this world. परमेश्वर ने यीशु యేసు मसीह को ప్రభుని దేవుడి లోకానికి పంపించిన ఉద్దేశం ఏంటంటే कर्ता के समय दे we might live through him. और మనము ఆయన ద్వారా ఈ లోకంలో జీవించాలని. हम और मूलமாக இந்த உலகத்துல வாழணும். हम यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में जीना. Hallelujah. हालेलुया. We might live through Jesus. यीशु मसीह के द्वारा हम जीवन जीना Not है. through your job, not through your profession, not through your degree. నీ ఉద్యోగం ద్వారా, నీ డిగ్రీ ద్వారా, నీ వృత్తి ద్వారా కాదు ప్రేరణ. हमारा काम के द्वारा, हमारा नौकरी के द्वारा, हमारा पैसा के द्वारा नहीं, जीसस के द्वारा. हालेलुया. Through him. और मूलமாக Through Jesus. यीशु मसीह के द्वारा. Hallelujah. हालेलुया. When we pray, நம்ம ஜெபிக்கிறப்போ, last when we finish the prayer, நம்ம பிரேயர் முடிக்கிறப்போ we say one word. நம்ம ஒரு வார்த்தை சொல்றோம். What is that word? ஆமென். Huh? ஆமென். In Jesus name. In Jesus' name. In Jesus' name. यीशु मसीह के धन्य नाम में Last will say. நம்மளா கடைசில இயேசு In Jesus' name. యేసు నామములో అడుగుతూ ఉన్నాను. यीशु मसीह के नाम में मैं मांग रही हूँ. Hallelujah. हालेलुया. If you don't say in Jesus'
name, நம்ம இயேசுவின் நாமத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அப்படி நம்ம சொல்லலாம். that your prayer will not be heard. मैं यीशु मसीह के नाम में मांग रही हूँ, वैसा हम नहीं. Why we are mentioning Jesus here? நம்ம ஜெபத்தை கேட்கப்படாது, हमारा प्रार्थना को उत्तर नहीं आते. We'll receive answer only through Jesus. இதனால் இயேசுவின் நாமத்து மூலமா தான் நம்ம வந்து நம்ம அந்த பிரேயர் We receive healing only through Jesus. We receive blessing only through Jesus. We receive answer only through Jesus. क्योंकि यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही हमको उत्तर मिलते हैं. हालेलुया. Hallelujah. God sent His Son to this world. கர்த்தர் அவருடைய ஒரே பேரான குமாரனை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பினார். So we might புத்திர को भेजा. live through Jesus in this world. அவர் மூலமாக இயேசுவின் மூலமாக இந்த உலகத்துல நம்ம வாழ்வதற்காக यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में जीने के लिए. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Though Jesus came to this world, యేసుని இந்த ఉలగత్తుకు yes, ఈ లోకానికి వచ్చినప్పటికీ పరమేశ్వర్ यीशु मसीह all will not live through Jesus. ಎಲ್ಲ అందరూ యేసు ప్రభు ద్వారా జీవించలేరు. सब लोग यीशु मसीह के द्वारा नहीं जीते हैं. In Galatians ये समय मूलमा तो वाले మాట 4th chapter, गलती 4 గలతీయులు 4, గలతీయులు Galatians 4th chapter will read 6th verse, 6వ వచనం. You are sons. God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. If a son, then an heir through God. మరియు మీరు కుమారులై ఉన్నందున నాయన తండ్రి అను మొర్రపెట్టు తన కుమారుని ఆత్మను దేవుడు మన హృదయములోనికి పంపిను. కాబట్టి నీవిక దాసుడవు కావు, కుమారుడవే. కుమారుడవైతే దేవుని ద్వారా వారసుడవు. हालेलुया. यहाँ परमेश्वर का वचन गलती 4 के वर्स 4-6 में क्या लिखा है? 6 and 7. 6 और 7 गलतिया 4 और 7 நம்ம வந்து குமாரர்கள் சன்ஸா இருக்கிறோம். हम पुत्र बना है, हम गुलाम नहीं है. அந்த पुत्र स्वीकार அந்த आगे நமக்குள்ள कर्तव्य வச்சிருக்கார். वो पुत्र का आत्मा परमेश्वर को पिता बोल के बुलाने की आत्मा को परमेश्वर हमें रखा है. हालेलुया. Hallelujah. Listen, dear friends. सुनिए प्यारे मित्र, Jesus came into this world ये समय द उलगत 2000 years back. यीशु मसीह ये दुनिया में आए యేసు ఈ లోకానికి వచ్చాడు. 2000 साल के पहले ஆண்டுகளுக்கு முன்னாக அவர் வந்தார். But whoever believed in Him, அவர்களை யாரெல்லாம் விசுவாசம் வச்சாங்க, ఎవరైతే ఆయనలో విశ్వాసం ఉంచారో, repented for their sins, వారి పాపముల కొరకు పశ్చాత్తాపడ్డారో, जितनों ने उनका पापों के लिए पछतावा पड़ के यीशु मसीह में विश्वास किया है, யாரெல்லாம் உங்களுடைய பாவங்களுக்காக மனம் திரும்பி அவரை நம்பி விசுவாசித்தார்களோ, God sent the Jesus Spirit into our hearts. அவங்க எல்லாருக்குள்ள கர்த்தர் இயேசுவினுடைய ஆவி அனுப்பினார். उन सब में परमेश्वर यीशु मसीह के आत्मा को भेजा తన है. కుమారుడైన యేసు ఆత్మను మన హృదయంలోనికి పంపించాడు. அவருடைய குமாரனாக இயேசுவினுடைய ஆவி நமக்குள்ள அனுப்பினார். उनका पुत्र यीशु मसीह की आत्मा को हम में So we are no more slaves. మనము దాసులము కాదండి. அடிமைகள் கிடையாது. हम गुलाम नहीं है. And हालेलुया. you are a son. நம்ம पुत्र You కుమారుడవు. हम पुत्र हैं, पुत्रियों हैं, बच्चे हैं परमेश्वर के. Then you are a heir through God. நம்ம வாரிசுகளா இருக்கிறோம் கர்த்தர். దేవుని हालेलुया. ద్వారా వారసుడవాడు. हम परमेश्वर के वारिस हैं. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Listen, dear friends. देखिए प्यारे मित्र, What you are? நம்ம யாரா இருக்கிறோம்? हम You कौन are not हैं? a हम स्लेव नहीं slave. हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हम साधारण नहीं हैं, परमेश्वर దాసుడవు के वारिस కాదు. हैं. हम நம்ம கர்த்தருடைய வாரிசுகளா இருக்கிறோம். That's what God said. God Bible says, if anyone in Christ is a new creation. கர்த்தருக்குள்ள யாராவது கிறிஸ்துக்குள்ள ఎవడైనా క్రీస్తులో ఉంటే వాడు నూతన సృష్టి. तो यीशु मसीह में जो भी होता है All things are passed away. पुराना सारा बीत गए, పాతవి గతించిపోయేను. கடந்தது. What are those old things? तो पुराना काम क्या है? పాతవి గతించిపోయినంటే ఏంటవి? அவைகள் என்னது? You are no more a slave. నువ్వు దాసుడవు हम కాదు. अடிமை, எதுக்குமே अடிமை கிடையாது. हम किसी को भी गुलाम नहीं है.
Hallelujah. हालेलुया। You are free from the slavery. हम गुलामी से हम You are not a आजादी slave to मिला है। sin, drinking, smoking, नम- lies, పాపத்துக்கு, devil, కుడికి, పోయి పేరు పాపానికి, పెట్టుకుని, దెయ్యానికి, పార్టీకి, సిగరెట్లకు, త్రాగుడకు నువ్వు బానిసవు కాదు ఇంకా. हम सिगरेट पीने को, बुराई को, किस प्रकार का गुस्सा पाप को गुलाम नहीं है। हालेलुया। You are a son of God, Bible says, நம்ம எத்துக்குமே அடிமைகளே, நம்ம கர்த்தருடைய and புத்திரர்கள் the heir of God, हम to परमेश्वर का Jesus. पुत्र हैं, परमेश्वर का पुत्रियों हैं, उनके वारिस हैं, और దేవుని ద్వారా దేవునికి వారసుడు అయిపోతూ ఉన్నామట ప్రియులారా. அவருடைய வாரிசுகளா இருக்கிறோம், हम परमेश्वर के वारिस बनते हैं। Hallelujah. You see, dear friend, the great transformation happened in your life when you believe हम Jesus. ये समय యేసును నమ్మిన ప్రతి మరుక్షణమే గొప్ప కార్యము నీ హృదయంలో జరిగింది ప్రియులారా. இந்த நாள் அவரை நம்பினோம், जब हम यीशु मसीह में हम विश्वास रखा, हमें एक बड़ा बदलाव हुआ, நமக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றம் நடந்தது, நம்ம ये समय நம்பின அந்த நாள்ல இருந்து. Hallelujah. Hallelujah. You see, dear friend, ஆனால் காரணத்துக்கு பிரியமானவர்களே, you are no more a slave. நம்ம இப்போ அடிமை கிடையாது, हम गुलाम नहीं हैं। And Jesus said, और ये समय சொன்னார், you are not of this world. நம்ம இந்த உலகத்தார் கிடையாது, இந்த నువ్వు உலகத்தார் స్నేహు కాదు, हम నువ్వు ఈ दुनिया లోకానికి वाले नहीं చెందిన हैं। వాడవు కాదు. ये दुनिया के वाले नहीं है हम। You are belong to where? हम யாருக்கு சேர்ந்தவங்க, எங்க சேர்ந்தவங்க, हम You are belong to where? हम परलोक ராஜ்யத்துக்கு உள்ளவர்। God David said, दाऊद ने सुना, दाऊद my help मेरा मदद comes from America. अमेरिका से आते हैं, Huh? My help comes from Nepal. नेपाल से आते हैं, भारत देश से आते हैं, वो आदमी से Or my help comes from Indian government. तो ये मेरा पगार से आते हैं, मेरा सैलरी से, मेरे गवर्नमेंट से नहीं। What is it? पर दाऊद ने क्या My help comes from the Lord, என்னுடைய உதவி கர்த்தர், வானத்தையும் பூமி உண்டாக்குன கர்த்தர் the creator of heaven and earth. भूमि और ये आकाश को सृष्टि किया, सृष्टि के मालिक से मेरा मदद आते हैं। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The same way, அதே விதத்துல if you are really born again, நம்ம if உண்மையான you are a child of God, ரட்சிக்கப்பட்டு if Jesus' Spirit is in you, அவருடைய ஆவி நமக்குள்ள இருக்கிறப்போ हम पे परमेश्वर का उद्धार मिला है। where your help comes, जीसस के आत्मा हम में होगा तो where your help comes, हमारा मदद कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं हमारा मदद? Joshua, from where? Through God, from heaven. David said, The maker of heaven and earth. where my help cometh. दावीद के cry में నాకు సహాయం ఎక్కడ దొరుకుతుంది? मदद कहाँ से आते हैं? परमेश्वर भूमि आकाश को He said, I lift up my eyes towards the hills. मेरा कण కొండల తట్టు నా కన్నులెత్తుచున్నాను. कणगले पाकिरेन मैं पाकिरेन मैं वो पर्वत की ओर देख रहा हूँ जो परमेश्वर ने बनाया है। Where we need to look today? हम एक में उदय लिखा हुआ Where the children of God, where we need to look? परमेश्वर के దేవుని పిల్లలు ఎక్కడ చూడాలి? कहाँ किसकी के ओर देखना है मदद के लिए? बोलिए Who is there? कौन है वो? जो धरती और भूमि को बना हुआ Where David मालिक was है। looking? दाऊद ने कहाँ देखा? He was looking towards heaven. और परलोक की He was looking towards the Creator. उस वर्ग के ओर देख He was रहे थे। looking towards Jesus. यीशु मसीह की ओर देख रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। If you don't look to Him, हम इस समय पाकामल पुरानी you will live like a slave in this world. You die like a slave. यीशु मसीह की ओर हम नहीं देखेंगे तो నువ్వు బానిసగా జీవిస్తావు, బానిసగా చస్తావు ఈ లోకంలో. हमें गुलाम बन के Even after coming to Jesus. ये गुलामी में ही हम मरेंगे। நம்ம வந்து இயேசுவுக்கு ஓரமா நம்ம பார்க்காமல் போனா நம்ம அடிமைகளா வாழ்ந்த அடிமைகளா Many Christians are living like slaves, dying like slaves because no prayer in their lives. நிறைய பேர் கிறிஸ்டியன்ஸ் அடிமைகளாக ప్రార్థన లేదు, బానిసలుగా బతుకుతున్నారు, బానిసలుగా చస్తూ ఉన్నారు క్రిస్టియన్స్. बहुत सारा क्रिश्चियन गुलामी में जीते गुलाम बन के मर गए क्योंकि प्रेयर नहीं करते हैं। But Jesus said, God's word says, you are no more slaves. నీవు బానిసవు కాదు. நீ அடிமை கிடையாது। You are a son, you are a head of God. நீ पुत्रனா இருக்கிறாய், நீ மகனா இருக்கிறாய், तुम पुत्र है, पुत्रियों है, वारिस है। I don't care all that. बस मैं என்னமோ சொல்லி கொண்டு போறது I trust my strength. நான் என்னுடைய பலத்தால் I wonder and look at money. How old are you?
73. மணியை பார்த்து நான் வண்டர் பண்ணேன் So मुझे आश्चर्य last होता week है। we painted our one house. पेंटिंग करते हैं Per day. Minimum 15 times he went up, came ऊपर down. चढ़ते Padi हैं। and Sala kunted the kunted. 10 बार 15 बार If we go down once and comes up. चढ़ते हैं ये सीढ़ी ఒక్కసారి ఎక్కి దిగితే చాలు నడుము నొప్పి కాళ్ళ నొప్పులు మనకి. एक बार हम हाँ? सीढ़ी चढ़ेंगे तो उतरेंगे तो Thank हमारा God, I पैर don't know how long you will do like that. कितना हम परमेश्वर को धन्यवाद बोलना है। But yes, friends, देखिए our strength is limited. நம்மளுடைய பலன் ரொம்ப குறைகிறதா இருக்கிறது हमारा बल Our money is limited. हमारा पैसा बहुत कम है Our talents are limited. Our wisdom is limited. We think we know everything. நம்மளுடைய டாலன்ட் ரொம்ப கம்மியானது எல்லாமே கம்மி लिमिटेड हमारा का बल शक्ति पैसा सब कुछ कम है। If his strength fails, what he will do? நம்மளுடைய பலன் அது கம்மி ஆயிட்டா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? हमारा बल कम होगा तो हम क्या कर सकते But हैं? yes, the Bible says, बाइबल बोलते हैं from your childhood உன்னுடைய childhood till you die, நீ மரிக்கிற வரணும் God wants to carry you on his கர்த்தர் wings, நம்மை on his hands. சிறுகையிலே அவருடைய கையில நம்மை சுமப்பார் చిన్న వయసు నుంచి చచ్చిపోయే వరకు దేవుడు తన చేతుల మీద మోస్తాడట ప్రేమ. हमारा जन्म से हम मरने तक परमेश्वर बोल रहे हैं उनके हाथ में What it shows, उसके लेते हैं he wants to give his strength to you. वो चीज என்ன காட்டுகிறது அவருடைய பலம் ఆయన బలం నీకు ఇస్తానంటున్నాడు. उनका बल उनका शक्ति He wants to support your life, हम तुम्हारा जीवन को your family. तुम्हारा परिवार को तुमको सपोर्ट He wants to take care of you. उन्होंने पूरी He wants to bless you. सपोर्ट करने पाकर आशीर्वाद पाकर तुमको सपोर्ट करने के लिए आशीर्वाद देने के लिए देख रहा है। Hallelujah. हालेलुया God sent Jesus यीशु मसीह so that we might live through him in this world. और मूलமாக இந்த உலகத்தில் நம்ம வாழ்றதுக்காக परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा में इस दुनिया में हम जीने के लिए ప్రభు ద్వారా ఈ లోకంలో మనం జీవించడానికి దేవుడు యేసయ్యని లోకానికి పంపించాడు ప్రేమ. Hallelujah. हालेलुया Only when we pray, नंबर 26 को जब हम प्रार्थना when करते we spend time with him, उनके साथ हम समय बीते like Jesus. यीशु मसीह के और हम समय स्पेंड कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया When we look to him, और नोकी நம்ம பார்க்கிறோம் उनके ओर जब हम देखते like David, दावीद बोले like Jesus. ऐसा में बोले దావీదు వలె యేసయ్య వలె పరలోకం వైపు మన సహాయం కోసం మనం చూస్తూ ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నట్లయితే दावीद बोले नंबर 3 नोकी पाकर परमेश्वर के ओर ही हमारा मदद के लिए जब हम देखते हैं Jesus said here in Luke 11th chapter, 11 लूका 11 में जीसस क्या बोल रहे हैं? లూకా 11వ అధ్యాయం लूका का सुसमाचार 11 में क्या बोल रहे हैं परमेश्वर? says here, yeah, 11 में क्या 9th verse, No, 11 11:9. Anyone please quickly. And I tell you, ask and it will be given to you. Hallelujah. हालेलुया What we should do in prayer, wait sister. What we should do in prayer? हम प्रार्थना में क्या करना है? Only looking like this. కళ్ళు తెరిచి ఏమైనా పడతాయేమో, if something God puts down from heaven. परमेश्वर कुछ डाले But Simon, you tried? क्या Did you look to God every time? परमेश्वर को हम मांगना है बाइबल What, में Joel? लिखा है, जब हम मांगेंगे परमेश्वर हमको देगा। Listen, dear friends. खेले बिल्कुल कपड़ मपी ताकत सोगा In prayer, what you should do? हम जगत ले Ask. केकनो हम मांगना है। Now what? हालेलुया There's a proverb in Telugu. తెలుగులో ఒక ఆడకపోతే అమ్మ కూడా పొగ పెట్టదంట. नमके हाँ? हमारा भाषा में एक कहावत है, पूछेगा नहीं तो मांगेगा नहीं तो माँ भी खाना नहीं You'll ask देता your है। mommy. ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಕಮನ್ ಕೊನ ಅಮ್ಮ ತಾಯ Your mommy will come back at 3 o'clock to your home. ನಮ್ಮ By the time you say, நம்ம ரொம்ப பசியா இருந்தால் நம்ம கேட்கணும் Listen, your friend. देखिए ask. நம்ம கேட்கணும் हम मांगना है You must ask when you go to God. जब करते When you lift up your head. நம்மளுடைய தலை நம்ம குனிந்து தலை தூக்கி கர்த்தர்கிட்ட நம்ம கேட்கணும் परमेश्वर से मांगना है
Bible says God is in heaven, परमेश्वर स्वर्ग में है, devil is in hell. पिशाचानु नरकத்தில் இருக்கிறான். But I see some people, ஆனா சில when பேர் they pray, அவங்க ஜெபிக்கிறப்போ they will அப்படியே தலை தூக்கிக்கொண்டே they will hit their head to the floor. அந்த తల తీసుకెళ్ళి నేల కొట్టుకుంటారు. सिर को लेके वो Where they are looking? वो कीला वो मारते हैं सिर हाँ? को. Down. Down. Where the devil is. Hell. Say that word. Hell. That means they want help from? Devil. You're looking down means where you are expecting help. What David said, I lift up my Hands to the hands. उदावर बोल रहे मेरे आंखों के मैं पर्वत की ओर देखूंगा. So if you are looking down means you are looking to hell for help. ನಮಗಿಲೇ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಜಪಿಸುವಾಗ हम नीचे देखें. We should look to God. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೆ ನೋಡಿ ಜಪಿಸುವಾಗ. We should lift up our head. हमारा परमेश्वर की ओर हमारा आंख रखे हम प्रार्थना करें. Hallelujah. हालेलुया. And you should rise up your hands. కరంగలే తూకి हाथ उठा के మన రెండు చేతులు ఎత్తి ప్రార్థన చేయాలి. हमारा हाथ उठा के हम प्रार्थना करना है. Hallelujah. हालेलुया. And says here, और next read sister. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Wait. Seek. தேடுங்கள். Seek you will find. खोज में रहो आपको मिलेगा. Sometimes my wife, she will forget glasses where she kept. మా భార్య glasses ఎక్కడ పెట్టిందో మర్చిపోతారు. என்னுடைய மனைவி அவருடைய கண்ணாடி எங்க She will go here and there, searching. ఇక్కడ అక్కడ ఎదుర్కొంటారు. मेरा बीवी उनका आईना कहाँ रख के ढूंढते रहती है तेरी को नहीं पागा. Suppose if she doesn't ask, why should I ask him? No, I can't find. I don't care. ఎందుకు అడగాలి నేను? నేను కనుక్కోవాలన్నా ఏంటి? నేను ఎందుకు డిపెండ్ అవ్వాలి ఆయన మీద? అనుకోండి అనుకో. She will not go to work. Because without this she can't run the show. And she will not trying so much. And she will ask me. क्या काम है? She will ask me, did you find my glasses? Because she failed to get, she came and asked me. ఆమె దొరకనందువల్ల నా దగ్గరికి వచ్చి అడిగింది. Hallelujah. You see your friend. There are many things in this world you don't get with your own strength, with your money, with your talent. నీ శక్తితో, నీ టాలెంట్తో, నీ బలముతో ఎన్నో విషయాలు పొందుకోలేవు. If you are a proud person to go to God, నువ్వు గర్విష్ఠుడై ఉండి దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి నీకు గర్వం ఉంటే, you will suffer with that. मैं प्रार्थना नहीं करूंगी. Why should I pray? Why should I humble? Why should I repent? Why should I forgive? मैं क्यों माफी मांगना? You will suffer like that only. हम ही बहुत परेशान पड़ेंगे ना हम बहुत कष्ट. For going to God, you need to humble, you need to repent. దేవుడి దగ్గరికి అడగాలంటే తగ్గించుకోవాలి, పశ్చాత్తాపడాలి. And you must acknowledge your unworthiness. నీ చేతగాని తనని ఒప్పుకోవాలి ప్రభు దగ్గర. Lord, I don't know how to come out from this. ప్రభు ఈ విషయం ఎలా రావాలో నాకు తెలియదు. You must confess before him. ఆయన దగ్గర ఒప్పుకోవాలి ప్రేయర్. परमेश्वर के पास हम मांगना है. And you must show that you are relying on him, relying on his help, looking for his help. ఆయన సహాయం కోసం నువ్వు ఆశపడుతున్నావు అని చూపించాలి. Hallelujah. उनके मदद के लिए तुम इंतजार कर रहे परमेश्वर यहाँ कैसा बाहर आना मुझे मालूम नहीं. So when my wife comes and asks me, నా భార్య వచ్చి అడిగినప్పుడు, मेरा मन बीवी आके जब मुझसे पूछते हैं, I get compassion on her. आपको నాకేమొస్తుంది ఆమె మీద? షాల్ కలుగుతుంది. ఎందుకు? मैं उनको मदद करती हूँ. She can't go to work without glasses. Glasses లేకుండా ఆమె డ్యూటీకి వెళ్ళలేదు. काम में नहीं जा So I सकती. must find it. आगे तेरी ना कुड़कनो मैं उसको ढूंढ के देना है. So I will
I will go and sit here and there. இங்க அங்க போய் தேடி Thank God, God gave me good eyes, எனக்கு good vision. கண்ணாடி இல்லாமலே நான் நல்லா பார்க்க முடியும் मेरे आईने के बिना अच्छा देख सकता हूं Hallelujah. हालेलुया You see, dear friend, देखिए प्यारे मित्र when I go and search, no, where it is, எங்க இருக்கு நான் தேடுவேன் या कहां है मैं ढूंढता takes time, right? கொஞ்ச நேரம் எடுக்கும் இல்ல Takes time, no? She kept somewhere, and I have to go and find it. I will go and search. What Bible says here? बाइबल क्या बोल रही है Seek, ढूंढो தேடுங்கள் seek, not only just asking. கேட்டு விடுறது இல்ல தேடணும் हम मांग के You must seek till you find. नी कंडड़े దొరికే వరకు వెతకమంటూ ఉన్నాడు ప్రేయర్. मिलने तक हम परमेश्वर की खोज में होना है Hallelujah. हालेलुया How many days? एवढो नाळ How many minutes? कितना दिन कितना मिनट कितना समय How many minutes? How many days? We have to say. क्या நம்ம எவ்வளவு நாள் எவ்வளவு நேரம் நம்ம Huh? தேடணும் कितना मिनट कितना You have no strength, no faith, no patience to seek. நம்ம தேடுறதுக்கு நமக்கு பேஷன்ஸ் இல்ல You are used with ready-made. What is that food? Fast food. हम फास्ट फूड से हमको तुरंत चाहिए Fast food हमारे का पास word पढ़ते हैं हम। नहीं है धीरज नहीं है If you want anything, you will order in the Zomato or Pomato. ब्लिंकिट में Huh? किसी में हम ऑर्डर करते हैं तुरंत आ जाते हैं उड़ने நம்ம ஆர்டர் பண்ண உடனே வந்துரும் அதே விதத்துல நம்ம ஜெபித்தால் உடனே வந்துரும் Hallelujah. ஹalleluya Next, what read, sister? Knock Seek. and it will be open to you. Knock. கட்டட்டாவோ What you should do in prayer? தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் Ask. நம்ம கேட்கணும் Seek. தேடணும் Then, हम पूछना है मांगना है but it's all when we seek also we need not find. நமக்கு Then தேட finally what we do? knock பண்ணணும் Knock. हम खटखटाना है Knock. तटணும் Hallelujah. हालेलुया What Jesus said. ये समय ना सुनो Ask, it will be given unto you. கேளுங்கள், Seek, you will find. வாங்கோ, Knock, it will be open to you. தேடுங்கள் கண்டடைவார் ஒளிகள் అడుగుడి ఇవ్వబడును, వెదుకుడి దొరుకును, తట్టుడి తీయబడును అంటున్నాడు खटखटाओ ప్రభు. तुमको खुला जाएगा दरवाजा हालेलुया So without prayer, without asking, without seeking, without knocking, how you will get from God? हम बिना मांग के बिना परमेश्वर की खोज में रखे बिना परमेश्वर की को खटखटाए बिना खटखटाए कैसे हमको मिलेंगे You will continue in slavery without asking Jesus. நம்ம அப்படியே அந்த அடிமைத்தனமே இருந்து అదే దరిద్రంలో బతుకుతావు. गुलामी में ही हम रह जाएंगे You will continue with the same trouble, same sickness, same problem if you don't pray. अदे प्रश्न अदे प्रॉब्लम वही समस्या वही दर्द वही बीमारी उसमें ही हम रहेंगे So God said here, इसलिए परमेश्वर यहाँ बोल रहे and He हैं gave one example also. और उदाहरण एक उदाहरण दिया है 11th verse. 11 वचन में क्या बोल रहे हैं What father among you, if his son asks for a fish, will instead of a fish give him a serpent? మీలో తండ్రి అయినవాడు తన కుమారుడు చేపను అడిగితే చేపకు ప్రతిగా పామునిచ్చునా, గుడ్డును అడిగితే తేలునిచ్చునా అంటున్నాడు. परमेश्वर यहाँ उदाहरण देके एक बच्चे बेटा पिता के पास जाके पापा मुझे मछली चाहिए मांगेगा तो हम क्या सांप देगा नहीं तो अंडा चाहिए देगा तो पत्थर देगा पर इंग कर्तर केक्रार और मगन தகப்பன் கிட்ட போய் எனக்கு மீன் வேணும்னா பாம்பை கொடுப்பாரா முட்டை வேணும்னா கல்ல கொடுப்பாரா அப்படி கேக்குறார் You say if my son asks for a 5-star chicken, 5 star chicken இல்லனா నా KFC కొడుకు 5-star chicken అడిగాడంటే मेरे बच्चे will I give him a snake? मैं पाम्ब నేను పట్టుకొచ్చి పాము ఇస్తాను వాడికి? मैं सांप को देके क्या चिकन मांगेगा तो मेरा लड़का No, I am not like a God. నేను దేవుడు లాంటివాడిని కాకపోయినప్పటికీ ना कर्तर वहां बोले I seek my son's best. मैं परमेश्वर नहीं हूँ मैं इंसान हूँ फिर भी मेरा लड़का क्या पूछा है वो अच्छा वाला मैं Though it is raining or dark, I will go and buy and come. వర్షం పడినా చీకటిగా ఉన్నా నా కుమారుడిని సంతోష పెట్టాలని నేను షాప్కి వెళ్ళి పట్టుకొచ్చి ఇస్తాను. मैं माँ बारिश होने पर भी जो होने Like, पर no? भी Correct, Joel? मैं लेके What, आके Joseph? दे गए Correct only? करेक्ट राइट
What if I give snake? What will happen? अब पाम पकड़ते हैं ना लोग मैं सांप देगा तो क्या होगा In China, people are eating snakes. चाइना में सांप को भी खाते हैं If they go to market, मार्केट में कोना मार्केट में जब हम जाते they will buy only live snakes. அவங்க உயிரோட If the snake is dead, they will not buy. அது மर పాము చస్తే కొనరు. బతికి ఉండాలంట పాము. चाइना में मार्केट में जाके जीवित हुआ सांप Live snakes. मर चुके They like to eat. அவங்க சாப்பிட அவங்களுக்கு இஷ்டம் But dear friends, लेकिन प्यारे मित्र as a father, और भगवान when my son asks, जब मेरा पुत्र पूछते हैं I like to give to him. मैं उनको अच्छा चीज देना चाहता हूँ நல்ல காரியத்தை கொடுக்க நான் விரும்புறேன் But Bible says, लेकिन बाइबल बोलता है how much more will the heavenly Father give? பரலோக தகப்பனாக அவர் இன்னெவ்வளவு கொடுப்பார் ஒரு புலோக தகப்பனே పరలోకమందున మీ తండ్రి తన్ను అడుగువానికి నిశ్చయముగా పరిశుద్ధాత్మను వేస్తానంటున్నాడు ప్రియులారా. परमेश्वर बोल रहे हैं स्वर्गीय पिता और कितना ज्यादा उनकी आत्मा उनका आशीर्वाद हमको देगा जब हम उनके बच्चे हम उनसे पूछते हैं Hallelujah. हालेलुया So our Father in heaven, परलोकத்துல our heavenly Father, हमारा स्वर्गीय पिता nothing is impossible with him. पूरा ஒன்றுமே இல்ல उनको असंभव कुछ भी नहीं है I told you, I think one day one girl was in Sunday school. ஒரு பொண்ணு சண்டே ஸ்கூல்ல இருந்தால் एक लड़की संडे स्कूल में थी The teacher was telling the story. टीचर இந்த கதை சொல்லி கொண்டிருந்தார் टीचर ये कहानी बोल रही थी And she looked up वो மேலே பார்த்தார் and she prayed, Lord, I want to eat laddu now. நான் இப்போ லட்டு சாப்பிடணும் அப்படின்னு ப்ரே பண்ணேன் ప్రభు నేను లడ్డు తినాలని ఉంది నాకు లడ్డు కావాలని అడిగాను. லட்டு வேணும் அப்படின்னு ப்ரே பண்ணாங்க You know, when she prayed वो जब प्रेयर खत्म की and she looked down, அவங்க கண்ணு திறந்து பார்த்தால் and in front of her the laddu आगे was एक there. लड्डू थे அவங்க அந்த பொண்ணு முன்னால ஒரு லட்டு இருந்தது ఆమె ముందు లడ్డు ఉన్నదంట. एक लड्डू थे Who brought that laddu? யார் எடுத்து She went, she climbed, she clipped it up again. கண்ணு திறந்து மேலே யார் போனதா அப்படின்னு பார்த்தா कौन ले लेके आए देखे One crow was there. एक कौवा थे और Who is there? एक और काग இருந்தது அங்கே Hallelujah. हालेलुया See, God fed Elisha. எலிஷாவோட கர்த்தர் எலிஷா சாப்பாடு கொடுத்தார் How God fed Elijah? परमेश्वर एलिशा को Shall we खाना look at खिलाया this? कैसे How God fed Elijah in कैसे the wilderness. एलिशा को क्या लेके आया कौवा ने He sent bread a and crow to Every day, no? कौवा को भेजा सुबह शाम रोटी और मीट लेके आने के लिए As long as he stayed there, அங்கே இருந்த அந்த கேரித்த குரூப் every day. हर दिन What and all he brought? என்னென்ன கொண்டு வந்தான் What and all he brought? bread and meat No, we don't like only bread, right? और वेறும் bread சாப்பிட முடியாது रोटी सिर्फ रोटी नहीं That's why KFC is very famous. அதனால தான் KFC ரொம்ப ஃபேமஸ் KFC, bread के साथ 5-star, चिकन From where they copy? मटन भी लेके आ रहे हैं from Elijah. एलिशा कौवा लेके आते थे रोटी Bread और and chicken, Bread bread and and meat. Every day he brought हर दिन लेके आए and fed him. और उनको खाना खिलाया और Hallelujah. हालेलुया Do you believe? नहीं विश्वास If you किया pray, ना जब तुम विश्वास करते हैं जब मैं if you प्रार्थना ask करता हूं, God, ना करते if you seek और God, तेड़ीना ना if you करते knock at his door, जब के परमेश्वर if की you खोज wait करता on हूं, him, घर में जो तो खटखटाता हूँ उनके लिए जब मैं इंतजार करता हूँ what God says here, वहाँ परमेश्वर क्या बोल रहे हैं your heavenly Father और ये स्वर्गीय पिता तुम्हारा स्वर्गीय give देते हैं those who seek him, ask him, यार अल्लाह के knock his door. जो मांगते हैं जो खोज में रहते हैं परमेश्वर उनको देगा हालेलुया Hallelujah. हालेलुया So, dear friends, इसलिए प्यारे मित्रों we are not after believing Jesus. कर्तर नम्मिన பிறகு परमेश्वर पे विश्वास ప్రభువుని करने के మనం बाद నమ్ముకున్న తరువాత परमेश्वर को विश्वास करने के बाद we are not ordinary people. நம்ம சாதாரண மானவங்கள கிடையாது మనం हालेलुया हम సామాన్యమైన साधारण వాళ్ళం नहीं కాదు. है हम बहुत पावरफुल है हम ரொம்ப पावरफुल हालेलुया Maybe you are from a very poor background. हम गरीब में
Maybe your father was very poor. हमारा पिता You don't have any property. You don't have any money. भूमि घर नहीं है வீடு land ஒண்ணுமே இல்லாமல் போனா But when you became the child of ஆனா God, கர்த்தராகிய இயேசுவின் பிள்ளையா மாறின பிறகு जो परमेश्वर के దేవుని बच्चे బిడ్డగా बनने మారిన के बाद తర్వాత उनके बच्चे बनने के बाद heaven is backing you. स्वर्ग लोक के सारा आशीर्वाद तेरे पीछे Who is backing you? परलोक में उन्होंने पिनाले इरुक्का हालेलुया Who is backing you? யாருக்காக நம்மளுடைய பின்னாலே heaven The creator of heaven and earth is backing ये you. वानजियों भूमि सृष्टितवर सृष्टि के मालिक तुम्हारा साथ है हालेलुया Hallelujah. हालेलुया You are not a poor anymore. You You are not a slave anymore. You are the heir of God. You have every right. Whatever belongs to God belongs to you. దేవునికి చెందినంత మీకు చెందినదే. To enjoy that. To enjoy that. Only comes once in a week to prayer. వారం ఒకసారి మాత్రమే చర్చికి రావాలి. Sunday to Saturday run like a rat, depending on your own strength. Listen, right? What do you need to do? What do you need to do? Like Jesus. Like Jesus. Bible says when he was on the earth, he was often in his prayer. తరచుగా ఆయన ప్రార్థనలో ఉండినాడు. Every day he was in prayer. Middle of the night he was in prayer. Early morning he was in prayer. Hallelujah. One day Jesus' disciples were eating. They asked him also to eat. Jesus said, I have food. I don't want this food. They wonder from where he got. Who cooked food for him? Who brought to him? Dear friends, when we become the heirs of God, hallelujah, will heavenly economy will support us. You know, in America, 3 days back, they removed 1 lakh people from jobs. 1 lakh మంది ఉద్యోగాలు పీక్ పడేశారు ట్రంప్. How many, Dirsha? They lost jobs. And Indians are not getting jobs. He's telling, go back to your country. I can't support you. You are a burden to us. America is in so many debts today. In America. But dear friends, heavenly economy will never fail. పరలోకపు economy ఎన్నడూ fail అవ్వదు. Hallelujah. Heavenly economy will support his children. పరలోకపు economy తన పిల్లలను సపోర్ట్ చేస్తుంది. How much ever they give, it will not be over. So where you want to look to America or heaven? Now many are looking to America, Australia, Korea. Where we need to look? Where we need to look? Joel?
heaven. हम कर्तरे नोकी पार्क्कोम Hallelujah. हम देखना है Only through prayer जगत मूलम प्रार्थना के द्वारा ही we will be connected with heaven. हम कर्तरोड कनेक्ट And we will get from heaven. कर्तर लेकिन हम पेट्रोल परमेश्वर की ओर से हमको मिलेंगे Hallelujah. हालेलुया Oh, you need not to worry for anything in this world. किसी के बारे में चिंता करने की जरूरत Because you are not of this world. You will not affect by the economies of the world. के वाले नहीं है दुनिया की चीजों हमको कुछ भी नहीं कर Indian economy fail, American economy fail, but heavenly economy will not fail. जब जो भी फेल होते हैं इंडिया अमेरिका परमेश्वर का इकोनॉमी नहीं फेल Hallelujah. हालेलुया So must rely on that economy. और मेरा नमस्कार को परमेश्वर पर भरोसा We must show to God, Lord, I come to you, I depend on you, I rely on you, I look to you for my help. परमेश्वर के पास जाके परमेश्वर मैं तेरे ओर देख रहा हूँ मेरा भरोसा तुझ पर है तुझ पर ही मैं आधार पड़ रही हूँ So if you don't pray, you will not get anything. हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा And you will die with your sickness, with your trouble, with your slavery. हम हमारा गुलामी में समस्या में वैसे ही हम मर जाएंगे To come out from that, ಅದರಿಂದ ಬೆಳಿಕನ್ನ उससे हम बाहर start praying from today. आज से प्रार्थना करना शुरू कीजिए Devil will not allow you. शैतान तुमको प्रार्थना करना Submit to God. Resist him. सबमिट करने पिशाच से एदित मिलेगा Kick him out. परमेश्वर के अधीन में आके Hey, शैतान Shubham. को विरोध करना What है you should do? To kick out the devil. शैतान को हम किक करना है शैतान को निकलने के लिए बोलना है When you pray, devil will put you to sleep. ನಮ್ಮ ಜಾಬಿಕರಪ್ಪೋ ಅಪ್ಪೋ ಏಕ್ ಕುಕ್ಕು ವರೋ Suddenly one call will come. जब Your loving friend will call you. तब नींद आते हैं अचानक तब कॉल आते हैं आपको कॉल करो Some stomach pain will come. आपको स्टमक पेन करो कभी हमको Beloved, पेट में दर्द tactics of the devil. ये सब शैतान का काम है ये सब But Bible says, resist him. बाइबल बोल रही है उनको हम What Simon? हम उनका Playing विरोध with करना us. है हम प्रार्थना करना है Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे प्यारे Let us pray. Close your eyes and pray, dear friends. करके हम प्रेयर करेंगे प्यारे Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, thank you. Thank